well and the picture clarity too. So we were discussing ionic equilibrium, and yesterday we have seen the topic. We know very well ionic equilibrium is a bit lengthy but very easy chapter. Very easy concepts are given here in this chapter, that is ionic equilibrium, and this chapter, this topic is related with our daily routine life. There are many biological processes in which this ionic equilibrium is involved. There are many industrial processes in which this ionic equilibrium is involved, and that's why this makes a big importance for us to study this chapter well. Concepts are very easy. What we have seen here in this chapter, as the word suggests, ionic equilibrium, there lies an equilibrium between dissociated ions and undissociated molecules of the same substance. We know very well, matter or substances are classified into two categories, that is electrolytes and non-electrolytes. Electrolytes are the substances whose water solution can conduct electricity because these substances dissociate in water to produce cations and anions. On the opposite hand, electrolytes, non-electrolytes are the substances which do not produce cations and anions in aqueous solution or in water. Here in this chapter, we are concerned with electrolytes, not with non-electrolytes. Then, when we discuss electrolytes, electrolytes are again classified into two categories. That is, you can say strong electrolytes and weak electrolyte. Strong electrolyte dissociate completely, whereas weak electrolyte dissociate partially. Once again, strong electrolyte dissociate completely and weak electrolyte dissociate partially. Then, when we have examples of strong electrolytes, then strong acid, strong base, and salts are the examples of strong electrolyte, whereas weak acid, weak base are the examples of weak electrolyte. That is what we have seen in last lecture. That means here in the chapter, we are concerned with acid, base, and salts. Whatever it may be, that may be a strong or weak, but acid, base, and salt, that is what we are concerned here in the chapter. So, before proceeding to the chapter, we need to discuss which substance has to be called as acid and which substance has to be called as base. So, different scientists from the different parts of the world try to define acid and base conceptually. Number one scientist, the Arrhenius. According to Arrhenius, acid is the substance which has the hydrogen and it produces H plus ions in aqueous solution. Base is the substance which has hydroxyl group and it can produce OH minus ions in aqueous solution. Going further, there is a Lowry and Bronsted scientist. According to Lowry-Bronsted theory, acid is the substance which donates a proton and base is the substance which accepts a proton. That is what we are saying. The third theory is related with nothing but the Lewis acid-base theory, which is very generalized, or you can say wake theory, because that involves the electrons. So according to this the Lewis theory, acid is the substance which accepts a lone pair of electron, and on the opposite hand, base is the substance which donates a lone pair of electron. That is called as a base over here. We have seen the example for all of them. So first time we got these definitions, conceptual definitions for acid and base. That is, you can say Arrhenius theory, Lowry-Bronsted theory, and what we have seen. That is, you can say Lewis theory. Then furthermore, in last lecture, we have seen that is acid is generally represented as Ha and base is generally represented as BOH and salt is represented as Ba. And we have seen the dissociation constant of acid and dissociation constant of base. So once again, that topic need to be a bit revised. So we have the topic dissociation constant of acid and base. So we can have acid is represented as, I stated, acid is represented as Ha. Ha dissociate, or it is double-headed arrow because it's a reversible reaction, double-headed arrow. Acid is noted by Ha. Ha dissociate to produce H plus aqueous plus A minus aqueous. So applying law of mass action, it's very important. Yesterday I stated what is law of mass action. Applying law of mass action. Applying law of mass action, we can have here K is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of Ha, and here is A. This is called as a dissociation constant of acid. When it comes to base, we are here base example. General example of the base is nothing but you can say BOH is a general representation of base because according to Arrhenius theory, acid produces H plus ions, base produces OH minus ions. So it dissociates to produce B plus aqueous plus OH minus aqueous. Applying again law of mass action. Applying law of mass action.
what we get here, therefore there will be Kb is equal to concentration of B plus ये वाला into concentration of OH minus this one and upon concentration of BOH. This is what we get Kb. So here this is a general representation of acid, this is general representation of base, and this is called a dissociation constant of acid, and this is called a dissociation constant of base. Define भी कर सकते हैं, it is a ratio of product of concentration of cations and ions upon product of concentration of undissociated HA molecules. We can say here, something like that here. So we got K and Kb. This is called a dissociation constant of acid. Now, once we understood this dissociation constant of acid and base, next topic जो हमने already कल start किया था, that is nothing but you can say relation. What is degree of dissociation and the relation between degree of dissociation and dissociation constant K or Kb, called as Oswald dilution law. Okay. So let's move to Oswald dilution law, but with this background. So please have a screenshot of these things. It's a very fundamental first derivation here in this chapter. What we get here. So everyone, please keep it in mind. Now we have to discuss Oswald dilution law. Oswald dilution law gives a relation between degree of dissociation alpha, and you can say Ka or Kb. So this is what you can say Oswald dilution law. Oswald is the name of scientist who put forth this theory, and according to him, this theory gives a relation between alpha, that is called a degree of dissociation, and dissociation constant of acid or dissociation constant of base. पहला हम लोग acid का देखेंगे, उसके बाद हम लोग base के लिए move on करेंगे. So we have to discuss dissociation constant of acid Ka. Okay. Now we have here. Acid is generally represented as HA. We know very well HA dissociates to produce concentration of H plus aqueous into plus concentration of A minus aqueous. Same step, applying law of mass action. Applying law of mass action. What we get here? Ka is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA. This is the equation number 1. What we get from this equation. इस equation में हम लोग को मिल जाता है. Clear? यहाँ तक शायद किसी को कुछ भी doubt नहीं है. Okay. Now, अब देखिएगा. We have this reaction. HA gives you concentration of H plus in aqueous solution plus concentration of A minus in aqueous solution. Okay. Abhi we have to make a chart. एक chart हमें बनाना है. Being this is a weak electrolyte. Oswald dilution law is applicable to weak electrolyte. Be clear right here? Weak electrolyte. Oswald dilution law is not applicable to strong electrolyte because कल ही देखा हमने strong electrolyte dissociate completely. We have seen degree of dissociation. Degree of dissociation का formula भी कल हमने देखा. That is total number of mole dissociated upon total number of moles taken. And that is alpha. So in case of strong electrolyte, number of mole dissociated completely. That's why total number of moles taken is 1 and number of mole dissociated is 1. So alpha is always 1. Degree of dissociation is always 1 in case of strong electrolyte. What about weak electrolytes? So that is why we discussed this Oswald dilution law. So we have taken this substance HA, that is weak acid, and consideration is कैसा है? मतलब Oswald dilution law consideration. Consider 1 mole of weak acid HA is taken, and that is put into the water, and the equilibrium is allowed to attain. At equilibrium, HA dissociates to produce H plus and A minus ions in aqueous solutions, and then we have to derive the relation between alpha and Ka at equilibrium. So consideration देखिएगा, we have taken 1 mole of this weak acid, and that is put into the water. That dissociate at equilibrium is allowed to attain. Then we can go ahead. So once equilibrium is attained, then we are going ahead. HA dissociate to produce H plus and A minus and solvents. So अब देखिएगा, we have to discuss initial moles. Initial moles. अभी ये बहुत important chart बनता है. Initial moles. अभी initial moles कितना है? इसकी बात करते हैं तो initial mole उसके 0 है. 1 है. HA की initial moles 1 हमने लिया है. इसके moles 0 है, इसके moles भी 0 है. शुरुआत में इनिशियली मतलब किसी भी रिएक्शन के शुरुआत में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बाद में बनने वाले. इसलिए इसका हमने 1 मोल लिया है, इसके 0 मोल्स है, इसके 0 मोल्स है. दैट नाउ ये जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल लिया है, उसका अल्फा एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. मतलब अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो हमने भले ही 1 मोल पानी के अंदर पुट किया है, डिसोसिएशन होगा कितना?
दैट डिपेंड्स, दैट इज मेजर्ड बाय अल्फा। सो हमने जो एसिड लिया है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इतना है, अल्फा इतना है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 0.03 व्हाटएवर इज दैट। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस HA। सो एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स बचेंगे? हमने मोल लिया है 1। एट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने बचेंगे? तो वी कैन से हियर मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली हमने इसका एक मोल लिया है, इसके 0 मोल्स है, बट ये जो सब्सटेंस हमने लिया है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है कि इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट हो चुका है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन जितने रेट पे चल रही है उतने रेट पे रिवर्स रिएक्शन चल रहा है, तो ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलेगा। यही तो मीनिंग है इक्विलिब्रियम का। ऑलरेडी हम अच्छी तरह जानते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेट at which rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, and that state is called as state of chemical equilibrium। इस रिएक्शन के अंदर HA H+ और A- प्रोड्यूस करता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये दोनों रिएक्ट होकर वापस HA तैयार होता है, ये रिवर्स रिएक्शन है। जिस मोमेंट पे दोनों रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट सिमिलर बनता है, वो उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हमें कैलकुलेट करने हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम। शुरुआत में इसके मोल्स है, इनके 0 है, रिएक्शन होने दिया, इक्विलिब्रियम आने दिया, और उसके बाद देखा हमने कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि भले हमें इसका 1 मोल लिया था, लेकिन इस सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा है। तो हमने 1 मोल लिया था, उसमें से अल्फा डिसोसिएट होंगे, अल्फा मोल्स डिसोसिएट होंगे बिकॉज़ वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हियर रिमेनिंग मोल्स विल बी 1 माइनस अल्फा, रिमेनिंग मोल्स विल बी 1 माइनस अल्फा। अभी इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री, इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या होता है आप समझते हो? स्टोइचियोमेट्री मतलब the quantitative relationship between reactant and product, that is called stoichiometry। so this is the reactant जिसके आगे 1 मोल है, इसके आगे 1 मोल है, इसके आगे 1 मोल है। so that's why हम ऐसा पढ़ सकते हैं 1 mole of HA produces 1 mole of H+ and 1 mole of A-, that is what we get। reaction इसी तरीके से पढ़ा जाता है, जानते हो आप, समझते हो? सो इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री मतलब ये यही बताता है कि इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका मोल है। इसका कहना ये था है कि अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 1 मोल पैदा होता है, इसका 1 मोल पैदा होता है। अभी फिलहाल में हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। भले हमने 1 मोल लिया है, लेकिन उसमें से अल्फा ही जाएंगे। तो अगर इसमें से अल्फा जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये रिलेशन ये बताता है इसके एक के साथ ये बनेगा तो इसके अल्फा के साथ इसके अल्फा ही बनेंगे। सो इन दैट सेंस we can say इसके जो मोल्स होंगे वो अल्फा मोल्स होंगे, इसके जो मोल्स होंगे वो भी अल्फा होंगे, ऐसा उसका मतलब है। ये थोड़ा सा ऐसे ही है कि मानो आपके डैड या मॉम ने आपको 100 रुपया दिया, ऐसे पॉकेट मनी आपको 100 रुपया दिया, और आपने बाहर जाके अपने 100 रुपए का 100 रुपए में से अपने चाय पिया। मानो आपने अभी चाय पिया तो 10 रुपए का चाय है, आपके पास 100 रुपए थे, आपने चाय वाले को 10 रुपए का चाय पिया, उसने आपने उसको 100 रुपए दिए, उसने 90 रुपए वापस दिए, उसके पास 10 ही है ना। तो शाम को जब आप घर आए तो आपके पास अभी बचे कितने पैसे हैं? 90 रुपए, क्योंकि आपके पास 100 थे, उसमें से 10 रुपए आपने चाय पे खर्च कर लिए। तो आपके पैकेट्स में से 10 रुपए ऐसे दूसरे के पैकेट में चले गए, जो भी चाय वाला था उसके पैकेट में चले गए। वही है, शुरुआत में हमारे पास 1 मोल था, उसमें से अल्फा खर्च करने वाले हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो जाने वाले हैं। तो 1 में से अल्फा चले जाएंगे तो इसके रिमेनिंग कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा। आपके पैकेट में कितने बचे हैं? 100 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 90। तो शुरुआत में हमारे पास 1 था, उसमें से अल्फा मोल चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 1 माइनस अल्फा मोल्स बचेंगे। तो इसके अल्फा बनेंगे, इसके भी अल्फा बनेंगे। सो वी गॉट दिस वन। सो वी हैव लॉस्ट 1 माइनस अल्फा, वी गॉट अल्फा, एंड हियर आल्सो वी गॉट अल्फा। इतने हम लोगों को मिल जाता है। दैट इज द मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने के बाद HA सब्सटेंस के 1 माइनस अल्फा इतने मोल्स वहां पे बचे हुए हैं, इसके अल्फा इतने मोल्स तैयार हो चुके हैं, और इसके भी अल्फा इतने मोल्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस कॉन्संट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कॉन्संट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो किसका कॉन्संट्रेशन कितना है ये हमें डिस्कस करना है, किसका कॉन्संट्रेशन कितना है हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखिएगा सवाल ये है, कॉन्संट्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, कोई जानता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्संट्रेशन? Concentration का एक बेसिक फॉर्मूला है, concentration is equal to N upon V। This is the general formula for concentration। Concentration is equal to number of moles upon volume। So जो भी number of moles है वो यहाँ पे और volume यहाँ पे आता है। This is nothing but the concentration। तो in order to calculate the concentration, we need a number of moles divided by volume। इसके अंदर आता है।
अभी देखिए इसका कंसिडरेशन ही यही था कि we took a 1 mole of HA and that dissolved into V decimeter cube volume of water and alpha is its degree of dissociation. Then how we are going to give the relation between alpha and K. So इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है 1 माइनस अल्फा है और टोटल वॉल्यूम V इतना है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अभी इसके नंबर ऑफ मोल्स है कितने 1 माइनस अल्फा अपॉन V इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन दैट कंटेनर। इसके अंदर क्या होगा अल्फा अपॉन V इज अ कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या होगा अल्फा अपॉन V इज अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी देखिए ये सारे सब्सटेंसेस इसी कंटेनर के अंदर है, ये हमारा कंटेनर है। ओके सो हमने रिएक्शन किया है, ये रिएक्शन इस कंटेनर के अंदर किया है, तो इस कंटेनर के अंदर तीनों सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, HA भी प्रेजेंट है, H प्लस भी प्रेजेंट है और A माइनस भी प्रेजेंट है। और इसके कारण हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा तो 1 माइनस अल्फा इसके मोल्स है डिवाइड बाय वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है इतना उसका कॉन्सेंट्रेशन है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसके मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसके मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज अल्फा अपॉन V। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला ये है बेसिक n अपॉन V इज अ फार्मूला ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। सो गॉट एवरीवन, वी गॉट दिस चार्ट। तो ये चार्ट हमारे पास तैयार हो जाता है जिसके अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मिलते हैं। ओके नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बताता है देखिए, we have this equation Ka is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA। we have this equation, am I right? Already हमने derive किया this equation। इस equation के अंदर this is Ka, this is concentration of H plus, this is concentration of A minus and this is concentration of HA। do we have the values of these compounds calculated here? Yes, they are calculated। so we can say this is the HA और इसका concentration ये है, नीचे हमने यही ट्राई किया यहाँ पे, concentration at equilibrium किसका HA का, तो concentration of equilibrium HA का इतना है, this one is concentration of H plus is this and concentration of A minus is this। so ये जो पहला टर्म है concentration of H plus is here, ये है, concentration of A minus is here and this is the concentration of HA which is here। ये हम अच्छी तरह जानते हैं concentration is always written in square bracket, तो पढ़ने का तरीका ही ऐसा है, K is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA। सबके concentration हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो वो वैल्यू पुट करते हैं, putting this value here we get Ka is equal to concentration of H plus is this alpha upon V into concentration of A minus is this, that is alpha upon V upon concentration of HA is this, concentration of HA is this, so this is you can say 1 minus alpha upon V is the concentration of this substance। remember this। so हमने जो इस चार्ट के अंदर वैल्यूज बनाए थे वो वैल्यूज हमने यहाँ पे इक्वेशन के अंदर डाल दिए, तो यहाँ पे डिराइव किया था इस इक्वेशन से। ओके सो नाउ वी कैन से लाइक दिस, सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, K is equal to this is alpha square, alpha into alpha square upon V square into 1 minus alpha upon V ऐसा आ जाता है, या फिर आपको ये डिफिकल्ट लगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is 1 minus alpha upon V ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये अभी और सिंपलीफाई करेंगे तो Ka is equal to alpha square into V square into ये जाएगा V upon 1 minus alpha। okay so we got cancelled, then what we get K is equal to alpha square upon V into 1 minus alpha ऐसा आ जाता है, 1 minus alpha आ जाता है। ठीक है, अभी what is this 1 minus alpha? 1 minus alpha है क्या, जो यहाँ से है हम अच्छी तरह जानते हैं, 1 is the initial number of moles taken and alpha is its degree of dissociation। अभी when we talk about the degree of dissociation हमने अच्छी तरह देखा है, degree of dissociation of strong electrolyte is always 1 because strong electrolyte dissociate completely, whereas degree of dissociation of weak electrolyte is very partial। मतलब इसका ऐसा है कि अगर हम 100 मोल्स लेते हैं, 100 में से एक का दूसरा मोल्स चला जाएगा, 100 में से एक का दूसरा मोल चला जाएगा, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स वेरी निग्लिजिबल। सो इसका मतलब ये होता है कि 1 minus alpha is almost equal to 1, being this alpha is very small। weak electrolyte के केस में alpha का वैल्यू बहुत छोटा होता है, so 1 minus alpha is approximately equal to 1। इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उसमें से 1 रुपया चला गया, तो 1 करोड़ के सामने 1 रुपया इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, तो उसी टाइप का ही है 1 minus alpha is almost equal to 1। the reason behind that alpha is a degree of dissociation which is very small in case of weak electrolyte।
किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, and that's why 1 minus alpha is approximately equal to 1. So in this case you can see here we can write alpha k is equal to alpha square upon v. ये इक्वेशन आ जाता है, ये इक्वेशन आ जाता है. अभी ये भी हम जानते हैं, अभी मैंने बेसिक इक्वेशन लिखा था, but concentration is equal to n upon v. Concentration is equal to n upon v. हमने लिखा था concentration का टर्म क्या है, n upon v. n is number of moles, v is volume, and c is concentration. कोई भी concentration निकालना है तो बहुत जनरल फॉर्मूला है, concentration is equal to number of moles upon volume. इस केस में हमने number of moles कितना लिया है, 1 mole. We took only 1 mole. So अगर हमने 1 mole लिया है तो this equation becomes 1 upon v. Be clear now? Because n का वैल्यू कितना है, n is number of moles, which is 1 upon v. C is equal to 1 upon v. This is the equation what we get here. ये equation हम लोगों को मिल जाता है. Easy. Can we put this value here? तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ मैं. देखिएगा क्या आएगा फिर, K is equal to alpha square into C आएगा, क्योंकि 1 upon v is C. 1 upon v is C. C is 1 upon v. So we got this equation. तो ये equation हम लोगों को मिल जाता है. That is K is equal to alpha square into C. या फिर अगर हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन c. दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू रूट k अपॉन c. ये भी इक्वेशन आ जाता है. सो आप इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो. दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड k. अल्फा एंड k, अल्फा और k का रिलेशन मिलता है आपको. दैट इज व्हाट वी कैन से. Oswald dilution law. We are here with Oswald dilution law. Oswald dilution law gives the relation between alpha, that is degree of dissociation, and dissociation constant of acid like Ka. So this is the equation which is in the format of concentration and Ka or alpha, and this is the equation which gives the relation between Ka and volume and alpha. So ये दोनों equation मिल जाते हैं, and that is you can say dissociation constant of acid. So everyone please take note of this one. We are here with Oswald dilution law. Oswald dilution law is applicable to only weak electrolytes, and Oswald dilution law gives the relation between alpha, degree of dissociation, and Ka for weak electrolytes. पहला we are discussing for the acid. So इसका consideration ऐसा है. Consider 1 mole of acid is taken, weak acid. 1 mole of weak acid is taken, which is dissolved into V decimeter cube volume of water. Dissolved into V decimeter cube volume of water. Whereas alpha is its degree of dissociation. Alpha is its degree of dissociation. Then we can derive the relation between Ka and alpha. So we have this equation. How acid dissociate like this one, H plus A minus. Applying law of concentration, we get K is equal to concentration of H plus and concentration of A minus upon HA. Then we have derived this relation as reaction is like this one. Initial moles we have taken 1, इसके 0. Moles at equilibrium is 1 minus alpha because degree of dissociation is alpha. So we have taken 1. तो 1 में से alpha जाएंगे तो remaining कितने होंगे, 1 minus alpha. इसके alpha बनेंगे, इसके भी alpha बनेंगे. Concentration कितना होगा at equilibrium? Concentration के लिए basic formula है, that concentration is equal to n upon v. n upon v ऐसा formula होता है. So concentration n upon v, तो n मतलब number of moles जो A है और volume E है. So 1 minus alpha upon v is the concentration of this substance at equilibrium. Alpha upon v is the concentration of this substance at equilibrium. And alpha upon v is the concentration of A minus at this equilibrium. And ये values हम लोग इस equation के अंदर put करते हैं तो simplify करके हम लोग को equation मिल जाता है. So we have the relation between alpha and Ka जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ. Clear with this? So that is what we can say. Please have the screenshot of this equation. Everyone, please have a screenshot. Yeah, you can write it down. Yes, it's done, everyone. So this is nothing but the Oswald dilution law, dissociation constant of weak acid. Now let's move dissociation constant of weak base, but on this background itself only. इसी background पे हमें चलना है, ठीक है? So चलता है.
Any doubts? Difficult to anyone? Okay. Again, Oswald dilution law for weak base. For weak base. So we have to find it for weak base. Now, we have weak base के मतलब तो जानते हैं, that is consideration क्या हमारा consideration. Consider 1 mole of weak base dissolving V dm cube volume. Volume कितना है? V dm cube, V decimeter cube कितना volume है? Alpha is degree of dissociation. Alpha is degree of dissociation. Then we have to find out the relation between them. So weak base is denoted as, weak base is given as VOH. VOH dissociate to produce V plus aqueous plus O minus aqueous. Okay. अब देखिए इसी इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि इनिशियल मोल्स अभी के जैसा इनिशियल मोल्स, देन मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड देन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये निकालना है जैसे अभी हमने देखा था सिमिलर उसी टाइप से. सो वी आर हियर विद ओस्वाल्ड डाइल्यूशन फॉर वीक बेस, और कोई भी वीक बेस ले सकते हैं हम लोग. So consideration ऐसा है कि consider we have taken 1 mole of weak base and it is dissolved in V decimeter cube volume of water. Alpha is the degree of dissociation of this weak electrolyte. Then how we can derive the relation between alpha and Kb? Alpha and Kb. So this is the weak base which dissociates to produce V plus and OH minus. Initial moles क्या है? Initial mole consider क्या 1 mole. So we have taken 1 mole of this one. इनके 0 होंगे because they are product. देखिए This is the reactor. इसके मोल्स 1 है जो हमने टेकन है, ये प्रोडक्ट है बाद में बनेंगे तो उनके मोल्स 0 0 रहेंगे. मोल्स एट इक्विलिब्रियम इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 मोल हमने लिया था, 1 में से अल्फा चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 1 माइनस अल्फा. विल बी हैविंग 1 माइनस अल्फा. 1 माइनस अल्फा विल बी रिमेनिंग हियर, अल्फा विल बी फॉर्म हियर, अल्फा विल बी फॉर्म. ओके. अभी की तरफ एक मोल में से अल्फा चले जाएंगे, 1 माइनस अल्फा रिमेनिंग है. इसके अल्फा जाएंगे तो इसके अल्फा बनेंगे, इसके भी अल्फा ही बनेंगे. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सेम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, इसका अल्फा अपॉन वी, इसका अल्फा अपॉन वी. सो दिस इज द values of concentration what we can calculate. Now applying law of mass action to this equation, you can say applying law of mass action to this equation. इस equation को law of mass action apply करते तो क्या आएगा? Kb is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus upon concentration of BOH. इतना मिल जाता है. Okay. तो Kb is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus upon concentration of BOH. इतना आपको मिल जाता है. Clear? Now, bit going ahead, ये equation number हम लोग 1 मिल जाता है. Now, concentration of B plus यहाँ पे लिखता है. This is the concentration of B plus. The concentration at equilibrium for B plus is this. Concentration of OH minus is this. Concentration of BOH is this. So we can put all these values here. So what will get there? Kb is equal to B plus का है alpha upon V. Here again alpha upon V upon 1 minus alpha upon V. What we get here? ये हम लोगों को मिल जाता है. Okay, अभी की तरफ इसे simplify करते हैं. तो we got Kb is equal to alpha square upon b square into v upon 1 minus alpha. ऐसा मिल जाता है. ये वाला सॉल्व करते हैं. So therefore Kb is equal to V cancel, तो alpha square upon V into 1 minus alpha ऐसा मिलता है. बट यहाँ पे वापस हम यही लिखेंगे. But being alpha is very very small, 1 minus alpha is approximately equal to 1. वन साइड वही सिमिलर स्टेप्स है, बट वहां पे वीक एसिड था, यहाँ पे वीक बेस है. यही है, मतलब एसिड के बदले बेस है, ताकि ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है. कंसिडरेशन वही है. 1 minus alpha, 1 is the initial moles, alpha is the degree of dissociation. Degree of dissociation is very very small, and that's why 1 minus alpha is approximately equal to 1. So we can write this equation as Kb is equal to alpha square upon V. ऐसा लिखते हैं.
बट ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, कॉन्संट्रेशन इज इक्वल टू n अपॉन v, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन v आ जाता है. So instead of 1 upon v, we can put this c. So therefore, kv is equal to alpha. Kv is equal to alpha square into c आता है. So therefore, alpha square is equal to kb upon c. Therefore, alpha is equal to root kb upon c. This is the equation what we get here. Hope everyone got this equation well. Hope everyone got this equation well. That is alpha is equal to kb upon c. पहला equation क्या था? Alpha is equal to Ka upon C. So when it is a weak acid, here is the Ka, or whenever it is weak base, here is the Kb, and this is the relation between alpha and dissociation constant of either weak acid or either weak base. What we can derive here. So that is what we can say. This is Ostwald relation. So Ostwald relation क्या देता है? Ostwald relation law gives the relation between degree of dissociation of weak electrolytes with its a dissociation constant, either Ka or Kb. That is what we can say. और ये दोनों इक्वेशन है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन डेरिवेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में. दोनों बहुत इजी है. पहले क्या करना है, देखिए दोनों इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में मैंने कंसीडरेशन बताया था, लिखा नहीं था. यहाँ पे मैंने कंसीडरेशन थोड़ा सा लिखा है. आप जब एग्जाम में इस आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो आपको लिखना पड़ता है, बिकॉज टोटल ये डेरिवेशन इस कंसीडरेशन के ऊपर बेस्ड है. तो इसका कंसीडरेशन आप बुक में से भी पढ़िएगा, मैं भी अभी बता रहा हूँ. कंसीडर a 1 mole of weak base is taken and it is dissolved in V decimeter cube volume of water, whereas alpha is the degree of dissociation of weak base. Then we can derive the relation between K and Kb. So we have, this is the way how the dissociation occurs. Initial moles are this, moles at equilibrium are this, moles concentration at equilibrium is this one. Applying law of mass action to this equation, we got this equation हम पहले से derive करके आए हैं. Putting the values of this here in this equation, just we have simplified, and finally we come to this stage where we have seen 1 minus alpha is approximately equal to 1. The reason behind that, reason है इसके पीछे क्यों? क्योंकि alpha being very very small, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1 करोड़ में से 1 रुपया गिर जाएगा तो it's equal to nothing. उसी तरीके से 1 mole में alpha being very very small, this approximately is always equal to 1. So that's why we got this simplifying, and concentration is n upon v. ये बहुत जनरल फॉर्मूला है. कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिया है इसलिए 1 अपॉन v. तो इंस्टेड ऑफ c we can put 1 upon v, or instead of 1 upon v we can put c. So we have put here and just simplified, we got this relation. So this relation is for Ostwald relation for weak acid or weak base. इसे डिफाइन किया जा सकता है, इसे डिफाइन किया जा सकता है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट याद रखना है और आपको लर्न भी करना है. Degree of dissociation, alpha indicate करता है. So degree of dissociation of weak electrolyte, either acid or either base, doesn't matter. Degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to square root of concentration. Inversely proportional to Kb, K constant है, Kb constant होता है. K होगा तो भी constant है, Kb होगा तो constant है. तो दोनों इक्वेशन यही बताते हैं कि degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to square root of concentration of the substance, that's the weak electrolyte. This is the statement of Ostwald relation law for weak electrolytes. So keep in mind statement. What Ostwald relation law states that degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to square root of concentration. या फिर directly proportional to here. Instead of this अगर हम instead of c हम v भी put कर सकते हैं. तो c is 1 upon v. c is 1 upon v मतलब kb into v आएगा. So degree of dissociation is directly proportional to volume or inversely proportional to square root of concentration. ऐसा हम लोग कह सकते हैं दोनों तरीके से. So that is what we can say statement for weak electrolyte of strong acid or strong base. Clear with this? So that is what we can say was what relation law. In tomorrow's lecture we'll discuss that is auto ionization of water. Till then, thank you very much. See you tomorrow. Bye bye.